Om. 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 Sadashiv Samarambham सदाशिवसमारम्भाम् Shankaracharya Madhyamam शङ्कराचार्यमध्यमाम् Asmadacharya Paryantam अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् Vande Guru Paramparam वन्दे गुरुपरम्पराम् Vasudeva Sutam Devam वसुदेवसुतं देवम् Kansa Chanuramardanam हंसचाणूरमर्दनम् Devaki Paramanandam देवकी परमानन्दम् Krishnam Vande Jagadguru. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. We'll do that seventh shloka of the second chapter, right, which is Arjun's Prarthana, which is our Prarthana. Right? Karpanya dosho upahat swabhavah कार्पण्यदोषो उपहत् स्वभाव prachami tvam adharma sammūಢ cetah प्रच्छावित्याम सर्वसम्पूर्णचेता yat shreyasyat nishchitam bruhi tanme यच्छ्रेतया निश्चितं भूमि तन्ने shishyasti aham shadimam tvam prapannam. शिष्यस् अहं स्वामि स्वामि त्वां प्रपन्नम्. So Arjuna is saying, Bhagavan, I have a karpanya dosh. Karpanya dosh means emotional weakness. In very simple, because this is a very, very modern term which everybody talks these days and understands. So the karpanya dosh means emotional weakness. Actually, mental. And dosh means the disease, and karpanya is weakness. So weakness of heart. That is, I have that problem, and then that's why I'm dharma sammūಢ cheta. I'm confused about my duty. What should I do? And शादी माम तो प्रपन्न, तो मुझे शिक्षा दीजिए, शिष्यस्ते हम, आई एम योर डिसाइपल, एंड नित श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि, मुझे बताइए कि व्हाट इज श्रेयस फॉर मी. दिस इज द सेवेंथ श्लोक of second chapter, which is Arjun's प्रार्थना, and the whole Gita is answer to this प्रार्थना. That's it. All teaching is answer to this प्रार्थना. और इसको कभी एनालाइज हम लोग करेंगे. This श्लोक has few things, and the entire teaching is based on that. And then we read 12th shloka of 12th chapter, which is the summary, if some sense summary of Bhagavad Gita. That's the teaching. So we'll say that. Shreyo hi jnanam abhyasat श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् jnanadhyanam vishishyate ज्ञानाध्यानं विशिष्यते dhyanat karma phalatyagah ज्ञानात् धर्मफलत्यागः tyagat shanti anantaram. त्यागः शान्तिरनन्तरम्. So that is a 12th shloka of 12th chapter, which summarizes the entire teaching, we can say, because Bhagavan is saying that abhyas, then abhyas, next step is gyan. Abhyas means practice, you just do, but know what you're doing. And the next stage is dhyan, assimilate the teaching, which we translate into Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. But the shanti comes from karma phal tyag. Because the obstacle in all this sadhana is the phal. That's the obstacle. And that obstacle is valid for all of us, including sadhu, sant, mahatma. सबको वही समस्या है. There is the biggest obstacle कि सब कुछ अच्छा होता है लेकिन कर्म फल पकड़ लेता है. And भगवान से त्यागा शांति अनंतर, कर्म फल त्याग. जब तक वो detachment नहीं आएगा, we call it vairagya, many names are there. But in simple terms, as long as I'm attached to that, Shanti Anantaram, Anantaram. The word you say Anantaram means uninterrupted. Anantaram is uninterrupted. Shanti, thodi to we get like glimpse of peace we get. And that's the shlok today we are going to read, that wonderful shlok of 19th of this chapter. But uninterrupted peace. It is always there. The sansar will never change. And sansar will have all the problems. But and today's shlok is we'll reach to that, which says
And so Bhagwan describes, and he says, Yatha Deepa Nivastastha Na Ingate Sa Yogina Chitta. We'll read the Shlok 19 Shlok. It says that like the flame is unflickering when there is no wind. If room, there is a wind, then flame will flicker. That's the nature of the flame. Similarly, Bhagavan is saying the nature of the mind is to flicker. Today is the D-Day, we call it, like, because 80 years ago, the United Forces led by United States invaded the area of France, Normandy area where Nazis were there, the Hitler, and they removed make the France of entire Europe free from the oppression or tyranny of Hitler, right? That's why they call it D-Day today. And there are a lot of celebration. President is talking. Why? Because everybody loves peace. United States flew 8,000 miles from here to Europe because world peace. And of course, they stopped Hitler in 1945, 80 years today, 85, 80 years. So they are celebrating this day today because this day brings a peace, a democracy sustained in this world. That's what Bhagavan is telling Arjun, the entire Gita. The purpose of this Gita is, अरे ये धर्म को बचाना है, ये युद्ध नहीं है, ये protecting the dharma. That is so. So, and they do आप news में देखिए these days there are economic problem, there are tornadoes, there are fire in the California, the economy is bad, and some countries, Ukraine is in the war, and Hamas and Israel and India, all everywhere, and that sansar, the problems will never go away. Lekin withdrawing from those disturbances and staying calm, that is yoga. And that's what the shlok says, right? Yatha deepo nivatastha. Jaise agar hawa nahi hai, to flame is there, but unflickering. Similarly, all the problems in the world will remain as it is. Solve hongi nahi hongi doesn't. We have to keep working on that. But my mind is not flickering. But हमें disturbance हो जाता है कि अभी 49% अयोध्या में 2 सीट नहीं मिली है, बीजेपी नहीं आया, तो the entire WhatsApp is, we are so disturbed. और नरेंद्र मोदी की majority नहीं मिली, or Trump will win, or Biden. We are so disturbed by these worldly disturbances, and our personal also. Like, it's not political, and that is the whole shlok. So we'll reach that. But this chapter is Atma. Sometimes this chapter is called as Dhyan Yoga, and sometimes it is called Atma Sanyam Yoga. I personally like Atma Sanyam Yoga because Dhyan Yoga, the people our acharyas, they say Dhyan Yoga because they have reached to a stage. So they say from their maturity level. But for us, I prefer Atma Sanyam. Let's do that self-control first, sense control. Then we'll talk about Dhyan. So it's better for us, it is Atma Sanyam. Dhyan to ho jayega. So, and that chapter, that's why Bhagavan is talking about. We were on the 17th shlok. So this whole chapter is Dhyan Yoga, and there are certain, if we take notes of this chapter, so what is Dhyan? We have talked about number of times. Shravanam, Mananam, Nididhyasan. So Shravanam, Mananam is sadhan, and Nididhyasan is sadhan is become siddh. That's it. There are two things. Sadhan means a journey. Siddha means the destination you reached. Journey is over. So Shravanam, Mananam, kind of sadhan. Nididhyasanam is siddha. You reached this stage. That's a dhyan. Nothing but that's a Vedantic dhyan. So dhyan, but there are conditions for dhyan. One is you have to have, they call it chitta ki ekagrata. That whole Patanjali Yoga Sutra is about that. That means single pointed focus. That is the first requirement for dhyan. We do that, right? That's the requirement. The second is, we were talking, Pankaj Bhai, just before this class, the balanced lifestyle, which we talked, the 17th shlok talks about. We'll repeat that, right? So yukta parimitata or yukta charitra, balanced lifestyle. And we'll talk about 17th shlok. And the third is samadrashti, means the equal vision. Or we saw the shlok, right? अभी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? Whenever we see something, I see the first thing is
I like this thing or I don't like this thing. Raga dvesh. And then the drishti is not some. So Bhagwan, very strong condition is chapter raki hai. First thing is you have chitta shuddhi. Unless you have chitta shuddhi means the clean mind, the pure mind. If the mirror is not clean, no way you can see the reflection of anything in the mirror. So first thing is that. Second is the balanced lifestyle, which we see yuktahar viharasya yukta charitra. And third is samadrishti, that equal vision, and that comes from the prem, the compassion, karuna, advesh, asanchayed. We all live always in a doubtful state or state of mind. Everything we doubt. Oh, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है. This person is everything. And Chitu Bhaiya ji hai nahi. He's not there today. But I discussed with Chitu Bhai, he's a psychiatrist, right? So one day I was talking to him and we were discussing. So typically what we do, weather is bad or weather is good. Or for example, a flight was good, flight was bad. Now the third term which Bhagwan says, yukta. Yukta means there is different. Weather is not bad, weather is not good, weather is different. That is the mindset Bhagwan is trying to tell us. And that is called yukta chetasa or samadrishti. Samadrishti वाले को कुछ खराब लगता नहीं है. Yeah, आज ये ऐसा नहीं है. That's it. Today my mood is not good. No, today my mood is different because of something. And that is called samadrishti. So three conditions: chitta shuddhi, which is the single pointed focus, yukta charitra, balanced lifestyle, and samadrishti, the equal eye or equal vision. Unless we have these three, dhyan will not happen. This condition Bhagwan is given in this chapter. And this condition is given everywhere. So we'll go to 17th shlok of 6th chapter. Last time we did that, we'll repeat and move forward with thought, right? So 17th shlok of 6th chapter, Bhagwan is talking about the balanced lifestyle. Yuktahar viharasya युक्ताहार विहारस्य yukta cheshtasya karmasu युक्तचेष्टस्य कर्मसु yukta swapnavabodhasya युक्तस्वप्नावबोधस्य yogo bhavati dukkha. योगो भवति दुःखः. यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है. ध्यान योग के अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के ये लक्षण है. To him who is regulated in eating and recreation, regulated in action, who is regulated in sleeping and waking, Yoga becomes the destroyer of sorrow. Yeah. So अभी योग तो हम लोग बहुत हल्ला करते हैं, सब जगह योग करना चाहिए. So भगवान is clarifying. भगवद गीता में वो अष्टांग योग की ज्यादा बात नहीं करी. He is talking the final stage. बाकी तो करना ही है. चित्त शुद्धि में अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान ध्यान समाधि, and then satya hinsa parigraha, all those we have to do that. That is requirement, prerequisite है गीता के लिए. वो second chapter में भगवान बहुत डिटेल में बात कर चुके. So now he is saying yoga will destroy the sorrow or the grief or the distress or whatever misery unless you do all four things. So one is karma cheshta. Cheshta means the desire to do karma. So that cheshta should be yukta. Karma to hoga hi sahi. There is nobody can live without. That's what is third chapter. Nobody can live without karma. Bhagwan says even I have to do karma, Arjun. I have nothing to do in this world, but still karma I have to do. But cheshta karma ke piche, the intention behind the karma, that is to be integrated. That is to be sattvic. Integrated means in simple terms, adhyatmic terms, sattvic. So as long as we have sattvic cheshta, the karma will be dukkha. That karma yoga, that yoga which is based on this karma, will be able to destroy the sorrow. Automatically, destroy means ho hi jayega. So koi hathoda lege aane karma. Then he says yukta ahar viharasya. कर्म करते हैं किस लिए? And राम सुखदास जी एक चार्ट उन्होंने दिया बड़ा अच्छा. कर्म करते हैं because we earn something. But when we earn, we spend on what?
Ahar vihar. Ahar means eating or khana pina. Vihar means recreation. So we earn using the karm and then spend using the ahar vihar. So Bhagavan says in ahar vihar also you should be balanced. Yukt. कितना खाना है, कितना एंजॉय करना है, that should be युक्त too. And he is not saying कि एंजॉय नहीं करना है, खाना नहीं है. Balanced, harmony. So शिवपाल जी एक शेर था, हाँ आप है ना सामने, आपके लिए कहानी कि एक टाउन था, तो एक यंग डॉक्टर आया, उसने बोला कि मैं यहाँ पर क्लिनिक खोलता हूँ. And he was very well known doctor, and he thought कि I'll go there. वो कई जगह अच्छे lot of accolades or awards he had. So he said, this town I'm going to open and I'll treat people here, right? जब क्लिनिक खोला बट कोई आता ही नहीं था. एंड देन ही सेड ये चक्कर क्या है इस शहर में, मैं बाकी शहर में तो आई वेंट देयर एंड लॉट ऑफ पीपल केम व्हेन दे केम टू नो दैट शिवपाल जी ने यहाँ क्लिनिक खोला है. बट यहाँ पर देखते हैं, लोग मिलते हैं, लेकिन कोई पेशेंट नहीं आता. चक्कर क्या, कोई बीमार नहीं होता है. एक बुजुर्ग आदमी था, उसने बोला कि इस शहर की एक खूबी है, इसलिए कोई बीमार नहीं होता है. तो उसने कहा ऐसा क्या, भाई बाकी शहरों में तो वो बीमार होते हैं. बहुत बढ़िया बात बताई भगवान जो बोल रहे हैं युक्त आहार विहार से. उसने बोला यहाँ के लोगों के दो नियम है, ये बहुत अच्छे नियम है, हम सबके ऊपर लागू होते हैं. एक तो ये लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं. दे ईट ओनली व्हेन दे आर हंग्री. अभी देखिए कितनी बढ़िया बात, हम लोग अभी कुछ भी खाते रहते हैं, कभी भी खाते रहते हैं. दे ईट ओनली व्हेन दे आर हंग्री, एंड दिस इज गुड फॉर डॉक्टर्स. आप लोग एंडोर्स करेंगे, प्रेम जी और शिवपाल जी एंड हमारे other doctor friends, right? And the second is they only eat 3/4 of their stomach. That's it. They never fill the stomach. 3/4. इसलिए इस शहर में कोई बीमार नहीं होता, तो इसलिए आपका क्लिनिक यहाँ चलेगा. बट खैर वो तो ठीक है. डॉक्टर शुड बी हैप्पी कि भाई ऐसे लोग अगर शहर में, एंड दैट्स व्हाट आप लोग यही तो एडवाइस करते हो. द रीजन आई एम सेइंग दैट्स व्हाट यू एडवाइस पीपल, राइट? कि ईट व्हेन यू आर हंग्री एंड डोंट फुल. लक्ष्मण जी तो यही बोलते हैं पूरे टाइम. तो उनको लक्ष्मण जी को वन ऑफ द प्रेजेंटेशन वी वाज मेकिंग, एंड समबडी आस्क्ड हिम, आई मैं अकेले मुझे हंसी आती जब भी लक्ष्मण जी की बात. समबडी आस्क्ड कि लक्ष्मण जी वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे ही खाने पीने का सब. ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, राइट? ही सेज द सेम थिंग कि जब भूख लगे तब खाओ एंड 3/4 खाओ. तो उसने किसी ने पूछा सब प्रेजेंटेशन के बाद कि तो लक्ष्मण जी हमें क्या खाना चाहिए फिर. तो लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा हो, 1 घंटे से बता रहा हूं तुम्हें भूख खानी चाहिए. दैट वाज वेरी गुड आंसर. ईट ईट, तुम क्या खाने की बात कर रहे हो, पूरे टाइम खाना खाना सोचते हो, भूख की सोचो. एंड दैट्स व्हाट ही सेड. सो दैट इज भगवान से युक्त आहार विहार. अभी देयर इज अ सर्वे आई वाज रीडिंग समवेयर अबाउट ईटिंग इन अमेरिका, and there were like a couple of points why we overeat. The survey was done in America. Why we overeat, and they gave 4 reasons. One is that easy access to food. अभी पहले क्या होता था, कुकिंग करना पड़ता था. अभी now refrigerator is there, frozen food, easy access to food. Where is our buddhi? I mean, the food is easily accessible. Should we overeat? That's the problem, right? The second is emotional eating. We are watching TV, we are discussing, we are emotional, and all doctors can endorse that whenever you are in emotional distress, you eat more. You're likely to eat more because you are emotionally not balanced. इसके लिए हमारे कहते हैं भोजन के पहले प्रार्थना करो. एंड भोजन हमारे उसको नाम ही भोजन दिया है, और उसको प्रसाद कहते हैं. यू आर नॉट ईटिंग, यू आर टेकिंग प्रसाद. विद दैट माइंडसेट कि मैं प्रसाद ले रहा हूँ, तो then that you won't overeat because there is a conscious eating you're doing. The emotional eating. Third, the reason get too many options. Too many options are available. चलो एक रसगुल्ला भी खा लेते हैं, अरे एक रसमलाई भी खा लेते हैं. अभी हम लोग शादी में जाते हैं, there are 10 sweet dishes. I'll eat all 10 and including the cake, the wedding वाला, वो भी तो खाना ही है के wedding अभी. So that's why too many options. So the solution, our Shastra says that whenever you're eating, think of those people who don't have even one meal. You have 11 options. There are people in this world, many of them, they cannot afford to have even one meal. Forget about many options. So have that mind in thought. So then you will be consciously eating.
And the last is, of course, like hunger hormone. They say that, right? I don't know. I read that study. We build that over the habit is built. So there is a hunger hormone. Breakfast करो बच्चे को हम लोग बचपन से breakfast करके स्कूल जाना. We don't know whether it is needed or not, but आदत डाल दी बचपन से. So we will eat bagel. It's not needed, but we eat bagel because there is a habit now, and they call it like hunger hormone. So we have built that hunger hormone within us, and that is habit basically. So now 4 बजे habit है कि कुछ खाकरा वाकरा खाना ही है चाय के साथ, whether it is needed or not, but there's a habit. So we build those hunger hormones on our own. And so that Bhagavan says, Yukta Ahar Viharas. Be balanced. And then he continues that same thing. Sochne mein, jagne mein, sone mein, sab mein. We'll continue with 18th shlok. Because that shlok is, we have to keep practicing also, not only reading the shlok. Right? So 18th shlok. Yada vinayatam chittam. Yada vinayatam chittam. Atmanneva avatisthate. Atmanyeva vatishtate. Nispraha sarva kamebhyo. Nispraha sarva kamebhyo. Yukta itti uchite tada. युक्त इत्युच्यते तदा. इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग मुक्त है, ऐसा कहा जाता है. दीपक की बात आगे कही. बाद में आया, पहले ये 18th वाला है. When a perfectly controlled mind rests in the self alone, freed from desire for all objects, then it is said to be established in yoga. Yeah, so now it's a continuation of, if you do all 4 things, karma cheshtha, ahar vihar cheshtha, swapna cheshtha, and avabodha cheshtha. Avabodha means awaken. And when I'm awakened, I'm yukt. I know what I'm doing. If maybe I'm just playing. I know I'm playing. I'm studying. I know I'm studying. That is yukt, is integrated or focused. So 4 things we do. We do karma. We spend time ahar vihar. We are awakened or we are sleeping. Everything should be harmony, integrated, yukt. And then you'll have a balanced life. That's what I want to say. And then he says कि ऐसा चित्त जो है, ऐसा जो बैलेंस जिसके हार्मोनियस लाइफस्टाइल है, उसको भली पगार अवतिष्ठ, संपूर्ण कामनाओं स्पृहा रहित हुआ पुरुष. ये स्पृहा का मतलब होता है रजोगुण. Whenever we read स्पृहा in any शास्त्र, कि मेरा अपना स्टडी मैंने सोचा कि स्पृहा वर्ड आप कई जगह पढ़ेंगे. एंड स्पृहा का इंग्लिश ट्रांसलेशन इज पैशन. Something I'm passionate about, that is spraha. But that comes from rajogun. The root of that is rajogun. And a lot of people ask question कि अगर पैशन नहीं होगा तो फिर आगे काम कैसे होगा? No, depending पैशन किसके लिए. विवेकानंद का पैशन है, गांधी का पैशन है, तिलक का पैशन है. That's a passion for the global good, greater good, लोक संग्रह. That passion is not what भगवान is saying. ये हमारे पैशन की बात करें जो हमें होता है कि मेरे लिए. So that comes from rajogun. So भगवान is saying कि ये जो व्यक्ति है जो बैलेंस, जिसने 4 बैलेंस कर लिया, ऑटोमेटिक उसका रजोगुण कम हो जाएगा. स्पृहा रहित भगवान योग युक्त कहा जाता है. स्पृहा कम हो गई, रजोगुण कम हो गया, ऑब्वियसली तमोगुण तो कम हो ही गया, तभी रजोगुण तक पहुंचे. तो व्हाट विल रिमेन इज सत्वगुण. सत्वगुण मीन्स, सत्वगुण की डेफिनेशन ही है कि जिसमें आपको ज्ञान भाव बना रहे, जिसमें आपको अवेयरनेस बनी रहे, जिसको हम लोग आजकल माइंडफुलनेस बोलते हैं. Yeah, I'm always mindful of what I'm doing or even what I'm thinking. I'm mindful. So भगवान says कि ऐसा व्यक्ति योग युक्त कहा जाता है. तो जो 4 चीजें इसने कर ली, उसका रजोगुण कम हो जाएगा और योग युक्त हो जाएगा. So we'll skip 19 now. We'll go to 20 and come back to 19 later. So we'll read 20th shlok. Yatro paramate chittam. यत्रो परमते चित्तम. निरुद्धम योग सेवया. निरुद्धम योग सेवया. यत्र चैवात्मनात्मानं. यत्र चैवात्मनात्मानं. पश्यन्नात्मनि तुष्यति.
पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है ये। और हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। When the mind, restrained by the practice of yoga, comes to rest, and when seeing the self alone by the self, it is satisfied in the self. Right. So this shlok already we स्थित प्रज्ञ दर्शन का श्लोक था 72nd 54 श्लोक of second chapter. प्रजहाति, अर्जुन asked the question कि who is स्थित प्रज्ञ? ये भगवान जो बताएं, स्थित प्रज्ञ में जिसकी प्रज्ञा स्थिर है. And that definition we have to keep in mind, because the entire goal of Bhagwan was to make Arjun sthit prajna, and the goal of all this teaching is to make all of us to be sthit prajna. And simple definition of sthit prajna is, sthit means established. You can say always available. Established means always available. And prajna means gyan shabd aata hai, and pra is used in Sanskrit when it is sharpen. So sharpen ज्ञान, पता तो सबको है. एंड आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को भी समझ आता है. ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन दैट ज्ञान इज अवेलेबल टू मी व्हेन आई नीड, एंड मोस्ट ऑफ अस फेल. सब मुझे पता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, सबको पता है. उस दुनिया में छोटा सा बच्चा भी जानता है 4-5 साल की क्रोध नहीं करना, लेकिन हम सब क्रोध कर बैठते हैं. So that is means our pragya is not स्थिर. And भगवान ने अर्जुन को इसलिए बोला स्थित प्रज्ञा, because you are going to be the war is going to start, and then same question will come. आपके मित्र होंगे, then you will be again confused. Should I shoot or not? Should I do this or not? Because you are deviating from your स्वधर्म. Because प्रज्ञा आपकी स्वधर्म में होनी चाहिए, but now your प्रज्ञा become your personal मेरे relation. प्रज्ञा शरीर पे आ जाती है, and that's the problem. So that is not स्थित प्रज्ञा. So Bhagavan is in the sthit prajna means that knowledge is always available to me whenever needed. And I always give example. Tomato is a fruit. Everybody knows. Like नहीं तो आप देख लीजिए गूगल पे भी. Tomato is a fruit. Biology में पढ़ते हैं, right? But you don't add tomato into fruit salad. So knowledge, tomato is a fruit. Pragya, you don't add tomato into fruit salad. It will become poison. दूध के साथ टमाटर मिलाते हैं पॉइजन बन जाता है. आयुर्वेद के हिसाब से खा लेंगे तो आप यू में डाई. दूध के साथ कई चीजें नहीं मिलानी चाहिए, आयुर्वेद बोलता है, बिल्कुल सही बोलता है. तो दूध के साथ टमाटर मिला लेंगे तो पॉइजन बन जाए. इसलिए फ्रूट सैलेड में दूध होता है और टमाटर नहीं मिला सकते. दैट इज प्रज्ञा. और ये कहीं नहीं लिखा, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें सिखा दिया और हमें पता है. एंड दैट इज प्रज्ञा. सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग. ये जो यत्रो उपरमते चित्तम, जिस योग अवस्था में निर्दुआ चित्त, उपराम, उपराम मीन्स वी कैन से इट इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस. दैट इज उपराम. सो उपराम चित्त जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान में शुद्ध बुद्धि द्वारा साक्षात्कार. सो नाउ इट इज नॉट, देयर इज नो, व्हेन वी गो इन ध्यान, द मन इज चित्त शुद्ध, इज नॉट डिस्टर्ब, इट्स क्लीन. तुलसीदास जी का दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार. पर तुलसीदास जी, ही वॉज अ स्कॉलर. उन्होंने पहले ही दोहा बोल दिया कि पहले तो मेरा हृदय साफ कर दो प्रभु. निज मन मुकुर सुधार. मुकुर मीन्स शीशा, दर्पण. मेरे मन का दर्पण पहले क्लीन करो प्रभु, तब हनुमान जी की स्तुति करूंगा मैं, अपने गुरु से प्रार्थना करूंगा. सो चित्त शुद्धि, दैट इज. सो ध्यान के लिए जैसे हमने बात भी करी, सबसे पहली चीज है चित्त शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए मन. और फिर वो डेफिनेशन आई ऑलवेज से, हमारे गुरु जी बोलते थे, लोग बोलते हैं ध्यान से मन शांत होता है. नो, ध्यान से मन नहीं शांत होता है, शांत मन से ध्यान होता है. इट्स अदर वे राउंड. पूरी दुनिया बोलती है कि शांत से मन, ध्यान से मन शांत होता है. वो कहते हैं ये डेफिनेशन ही गलत है, होल वर्ल्ड इज टीचिंग रॉन्ग. नो, शांत मन से ध्यान होता है. और फिर उसकी अगली स्टेज है शांत मन ही ध्यान होता है. There is no other dhyan. If you are shant, you don't have to do dhyan then again.
अगर आप शांत है तो ध्यान ही हो रहा है, अभी कोई अलग से बैठने की जरूरत नहीं बैठने। दैट्स द होल गोल। सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि ऐसी स्टेज में सच्चिदानंद पश्यन आत्मनि एव तुष्यति। अब ये हम सबको अनुभव हो सकता है, एंड हमारे गुरुओं को अनुभव हुआ, इसीलिए उन्होंने सिखाया। When we reach to that state of mind where nothing is happening, all these disturbances of the world outside are not inside me, that time whatever feeling I have, that is called साक्षात्कार। अब वो कोई इसको परमात्मा का साक्षात्कार, somebody will, मीरा will के क्या है, मुझे कृष्ण दिखते हैं, तुलसी will say मुझे राम दिखते हैं, विवेकानंद will say मुझे काली दिखती है, कृष्ण मूर्ति will say मुझे कुछ नहीं दिखता है, बुद्ध कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिखता, आई एम जस्ट इन शून्य। एक ही बात है, डजंट मैटर। But that is the state where the world is not in us. That's it. ये सब disturbance बाहर के, my identity is lost. I'm not Sanjay Mehta. I'm not Rajiv Agrawal. I'm not this. I'm not American. Not Indian. Nothing is there. And that is what Bhagavan. That's what we're saying. Atmani eva tushti. उसमें जो संतोष, उसमें जो contentment मिलता है, that is a delight, and that delight is matchless. That inner joy, there is no better delight than that inner joy. That is inner joy. उसका ग्लिम्स हमें कभी कभी सबको आता है, भजन करते हैं या कभी आप खुद भी ध्यान करें तो आप, एंड दैट इज टू बी कंटिन्यू। विद दैट preface, we'll read 19 श्लोक, which is very very nice श्लोक। यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा उपस्मृता नियंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। As a lamp in a windless place does not flicker, that simile reflects a yogi with subdued mind practicing union with the self. Yeah, so Bhagwan is very good in metaphors. And Naveen Bhai, and I have prepared a list of, there are almost 20 metaphors in the Bhagavad Gita. And they are wonderful. So here he is giving that metaphor, the simile. Ki jaise, otherwise, if you keep the flame outside or lamp, the flame will flicker because there is a wind. But in the room where the wind is not blowing, oxygen is always there. We cannot argue that. But the wind is not blowing. So then the flame is standstill. Flame is alive. It's not flame is dead because there is oxygen. The flame is still alive, but standstill. So similarly, the yogi, so nivatast, vata means air, nivat means no air, no blowing air. Stha means sthan. So the sthan where the air is not blowing. In that, the deep, na ingate. Ingate means not flicker. Similarly, उपमा, that उपमा simile, आत्मनः योग युञ्जति, परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की स्थिति है। परमात्मा का ध्यान है, खुद का ध्यान डेवलपमेंट। when we reach to that state of meditation, that time, but by nature mind has आदत to flicker। ठीक है, अभी ध्यान में बैठे हैं, कोई कहीं जोर से आवाज आई तो उधर जाएगा, क्या आवाज आई एकदम से, कोई खुशबू भी आई, एंड we all can experiment that। आप ध्यान में बैठिए कभी, and somebody is cooking in the kitchen, and our mind is so बदमाश कि वो उसको पता लग जाता है कि डोसा बन रहा है या चाय बन रही है या अदरक की चाय बन रही है। Look at the senses are so smart. The mind will automatically decide, किसी को आपको ही बताता है कि क्या बन रहा है। 8 बज गई है, माइंड एकदम से याद आएगा नाश्ते का टाइम आ गया। अब कौन अपने आप, अगर मैं इस समय अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, इफ आई टेल देयर इज अ वर्ड, आप लोग सब लेट्स ऑल फोकस ऑन वर्ड कॉल एयर इंडिया। कैन वी इमेजिन वी कैन डू दैट, उस वर्ड पे ध्यान। द मोमेंट विल से एयर इंडिया, अरे लास्ट टाइम वो एयर इंडिया की फ्लाइट ठीक नहीं, डिले हो गई थी, उसमें टीवी नहीं चलता है, उसमें खाना ठीक से नहीं आता है, वो दिल्ली में लेट हो जाती है। उसके बाद बोइंग की प्रॉब्लम, बोइंग में प्रॉब्लम चल रही, बोइंग का प्लेन क्रैश हो गया, बाइडन से, our mind will go in all direction. Just one word, Air India, that is flickering mind. Bhagavan is saying,
लेकिन उसका एक ही रास्ता है, परमात्मा में उपरामता, परमात्मा में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट वी डू मेडिटेशन। ध्यान जब करते हैं तो सारा खेल इंद्रिय निग्रह का है, सेंस कंट्रोल। And all these senses are very powerful. They have tendency to go outside. As I said, like smell, thought. Even mind is a sense. Mind will go. Even when I open eyes, I see something. Immediately I decide, oh, this is not good. This is bad because I see that, right? Or hear. All these senses. So Sara khel in sense control. And once we have sense control, so now let's see. बंद कमरे में, like similarly, if flame is in the closed room, flame is not flickering, and I am sitting in a room where nobody is there, all my family members are downstairs, I am sitting in some loft or area where nobody is there, and I am peaceful. Now that Bhagwan is not there saying that. Bhagwan is challenging us. He says कि बैठो संसार में, everything should be, all the disturbances should be around you, but you are not flickering. That's what he's giving an example. He's not saying कमरे में बैठ जाओ, हिमालय पे जाके शांति है. No. With amongst all the disturbances of the world, when your mind is not flickering, that is the sthiti where you say, this is the yogi, that Bhagavan ne bola yoginah chittasya smrita. That is the state of yoga. Chitta means mind, we can say here. And smrita means it is said. So Bhagavan says that's हमारे शास्त्र ने कहा है कि, so example हमें लेना चाहिए उसका दिए का. But the main thing, so so recently there is a neuro scientist, I think University of Nashville, Vanderbilt, somewhere. These people, 4 or 5 neuroscientists, they were doing some study on mindfulness. So they went to Dalai Lama. Dalai Lama is a master of mindfulness. Modern time, I mean, of course, Bhagavad Gita, everything Buddha got from the same teaching, either Bhagavad Gita or Upanishad. Buddha also got mindfulness, and Dalai Lama practices all those. So they went to meet Dalai Lama, the neuroscience people. They're doing some study on mindfulness. So he told them, you people better come up with some processes, some study, some knowledge, which can make this world a better place to live happily. People need that. And it is your responsibility as a neuroscientist to come up with these things. So, and it is, iska naam bhul gaya, but he is a scientist. So he has written some paper also, mindfulness. And that's why mindfulness is very popular these days. So he said that before 2000, like 25 years ago, there were only, when he was doing study, only 40 paper he found on mindfulness. And so before, and we all know that, right? I think 2 decades or 3 decades ago, people never accepted meditation and all those things. But now the acceptance is increased, and increasing, like I think multiple times now. So now he says there are 4,000 studies on mindfulness in neuroscience. 4,000 studies in last 20 years, because they see the value. That's what Dalai Lama challenged, and we do that, right? So it is important. So it is not just we are talking as a adhyatma to hai, like it is useful for the entire, for myself also, for entire humanity, right? Because सब लोग अगर शांत रहेंगे, सब लोग, I mean, if everybody has same samadrashti, some charitra, and then shuddhi, then the whole world will be a better place. Yeah, that's what the whole disturbance will be there. जो जिनको करना करेंगे, but the other people. So that's what. So now again coming back to the example. So we stop the blowing of wind to make the flame not flicker. So what should we do for mind not to flicker? That is Bhagavad Gita. तो आगे जाके अर्जुन का एक प्रश्न भी आ गया इसी चैप्टर में कि चंचल ही मना कृष्ण वायु की तरह चंचल. ये कृष्ण आ गया, अर्जुन जाके याद दिलाएगा भगवान को कि आपने ऐसा बोला था. एंड ही विल से कि व्हाट इज द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन भगवान ने जो दिया है वो पूरे हमारे शास्त्र में वही सॉल्यूशन सबने दिया है. अभ्यास एंड वैराग्य. अभ्यासेन तु वैराग्येन च गृह्यते. देयर आर ओनली 2 वे यू कैन कंट्रोल दैट फ्लिकरिंग. And what is abhyas? Abhyas is practice. Practice, shamanam, mananam, nididhyasana. That is abhyas. And vairagya. Vairagya means not being, वो पंकज भाई हम जो बात कर रहे थे, not getting attached to things when not required. Attachment तो कभी भी required नहीं. Let's not, lot of people argue कह रहे हो attachment नहीं करेंगे तो हम पूरी दुनिया कैसे चलेगी. अभी चिंता नहीं करो आप,
you reach to that unattached stage, वो आपको सब दुनिया अपने आप चलती रहेगी, दुनिया ज्यादा अच्छी चलेगी, हम उसी की चिंता में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अरे अटैचमेंट नहीं होगा दुनिया के, ऐसा कुछ नहीं है। सो अटैचमेंट आप कम करो, आप भी सुखी रहोगे, दुनिया भी सुखी रहेगी, बट हम मानते नहीं ना उसको। सो देयर आर ओनली टू सॉल्यूशन, सो दैट इज द कवरिंग। सो फ्लेम को रोकने के लिए वी कैन हैव अ ग्लास कवरिंग, बट मन की फ्लिकरिंग रोकने के लिए ओनली कवरिंग इज अभ्यास एंड वैराग्य, which is the entire teaching. वो आगे हम पढ़ेंगे। I think we say all these shloks are continuation of that, and that's what they say. And simple terms में what is अभ्यास वैराग, in very simple mindfulness terms में जो आजकल technical term and people understand, remaining in the present. Flickering is nothing but the moment I go into the past, it's a flickering. I go into future, it's flickering. Because I'm going into the two stages or state of time and space, which are not known. The past is gone, you cannot do anything. Future is not come yet, I don't know. And my mind is always flickering into past and future. So they say remain in present. That is called unflickering of mind. So भगवान ने अर्जुन को टीचिंग शुरू कर दी, भगवान ने श्लोक ही बोला था, अशोचान वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंच नानु शोचन्ति पंडिता। गतासून जो चला गया है, विच इज गॉन पास्ट, अगतासून जो अभी आया नहीं है, फ्यूचर, नानु शोचन्ति पंडिता। पंडित डजंट ग्रीव, ग्रीव मींस पंडित डजंट मेडिटेट, रूमिनेट, अभी एक वर्ड है पॉपुलर है आजकल, रूमिनेट। सो rumination is always either in the past or in the future. That is rumination. जो और आप भगवान का ध्यान करते हैं तो वी से दैट वर्ड यूज रूमिनेशन, बट दैट इज निधिध्यासन, उसमें एस्टैब्लिश हो जाते हैं, दैट इज प्रेजेंट एंड दैट इज ध्यान। सो वी डू ध्यान। सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर, बट शंकराचार्य जी का एक भज गोविंदम में बहुत बढ़िया श्लोक है, उसके बाद हम ध्यान करते हैं। ही सेज योग रतो वा भोग रतो वा, आप योग कर लो चाहे भोग कर लो, डजंट मैटर, राइट। योग रतो वा भोग रतो वा, संग रतो वा संग विहीन, आप अटैच हो चीजों से या डिटैच हो चीजों से, संग रतो वा संग विहीन, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन ब्रह्मण में रमता है, भगवान में या आत्मा में, जो भी नाम दे, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति, उसको आनंद मिलता है। नंदति में आनंद। तो आप योग कर लो चाहे भोग कर लो, उसमें ज्यादा उलझो मत, आप अटैच कर लो डिटैच कर लो, उसमें उलझो मत, ब्रह्म में चित्त लगाओ। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति, दैट इज ध्यान योग। तो वो सब समझाने के लिए है, अटैचमेंट डिटैचमेंट, बट अल्टीमेट दैट इज ऑल मीन्स, नॉट द एंड। बट वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन मीन्स, वी वेस्ट अवर एनर्जी इन मीन्स, आर्ग्यू भी करते हैं लोग उसमें, उस पर चिंतन नहीं करना, उसको यूज करके क्लेफ होल्डिंग टाइप, राइट। व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज डन, देयर इज अ होल्डिंग, यूज दैट फॉर द, व्हेन कंस्ट्रक्शन इज डन, थ्रो दैट, दोस वुड इज ऑफ नो यूज, cliff holding we call it, right? So that's the thing. So all this teaching abhyas vairag is to make sure we rise above that. And yasya brahmani nandati 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 ananda hi ananda. So with that, let's do our meditation, and we'll, because we have to, I have a